First one, Hardik started business with cash. Hardik started business with cash 15,000 and machine 20,000. So cash, machine to capital, very first entry. बराबर है? Check करते जाओ फटाफट. Purchase goods of 9,000 less 10% cash discount. Your entry is purchase to cash to discount received. Purchase to cash to discount received. Okay, 9,000, 8100 and 900. Sold goods to Amar, it is Amar to sales 3,000. Distributed goods of 700 as free samples. That is what? Advertisement to goods distributed as free samples. Then brought stationery of 550 for office use, that is stationery to cash. Then received 950 from Dhanashri, a customer whose account was earlier written off as bad. What? Cash to bad debts recovery. Cash to bad debts recovery. Then we have Abraham invoiced us goods worth 3,000. Invoiced us मतलब हमने purchase किया है Abraham से. So purchase to Abraham. Okay. Purchase to Abraham, that is 3,000. Settled Abraham's account and he allowed a 5% cash discount. So इधर ही कर सकते हो, इसमें Abraham का ledger वैसे भी पूछा नहीं है. Directly you can do. It is cash discount allowed to Abraham. Okay. So that will be 3,000, 2,850 and 150 rupees. Cash discount allowed to Abraham. Exchange goods of 2,500 against furniture of the same amount. So, one second. Sorry. Abraham ka entry, I said, Abraham ka entry will be Abraham to cash to discount receipt. We are paying. Abraham to cash to discount receipt 3,000, 2,850 and 150. Exchange goods worth 2,500 against furniture of the same amount. That will be what? Furniture account debit to purchase लिख सकते हो या stock या goods भी चलेगा. Okay? Furniture to purchase या furniture to stock. For furniture. Sorry. Goods exchange for furniture account. हाँ, goods exchange for furniture. Exchange generally बहुत इतना होता नहीं है तो खाली goods चलेगा. Only goods is also fine. Goods exchange for furniture is representing goods only. वो भी चलेगा. Furniture to goods या furniture to goods given in exchange या furniture to stock या furniture to purchase is also fine. Ultimately, all these goods account are going to get merged into purchase account. Okay. Furniture to goods stock purchase 2,500. Withdrawn cash from ATM 5,000 for office use and 3,000 for personal use. Entry should be cash account debit, drawings account debit to bank account. Cash account debit, drawings account debit to bank. 5, 3 and 8. And last you have been asked only cash account. There is no opening balance, so simple posting to capital, to bad debts recovery, to bank, by stationery, by Abraham. And balance is 9,450. Please check. The closing balance of cash should be 9,450. 9,450. Is that clear? Only point there were mistake entries में खाली ये furniture वाले में एक दिखा. Some of you have written sales. Sales नहीं आएगा वहाँ पे. Purchase आएगा या फिर stock आएगा. क्या आपने बेचा नहीं है उसको exchange किया है. Discount वगैरह कुछ नहीं है तो it is simply furniture to stock. And दूसरा है ये closing balance में calculation error था cash account. वो check कर लो. Cash account closing balance should be 9,450. Please check that properly. Video should be on, all of you. Well, any doubt in this problem, anyone? All clear? Okay, let's proceed. Come to the class notes. Class notes में आ जाओ problem number. Can you show the ledger? Page number 35. Class notes, page number 35. Problem number 8. Thank you, sir. Page number 35, problem number 8.
Videos on Rudra, Shita, Shan, Pansi, Smith, Gaurav, Shita, Shita, Pujan, Maya, all of you. Video should be on. Video should be out. इसका नेटवर्क डाउन है मेरे को अपने आप पता चल जाएगा, कोने में दिख जाओ, कोने में नहीं हो तो आपका नेटवर्क ठीक है, वीडियो ऑन। Come to problem number 8. But my camera is not working. Yeah, I got your. Sorry. Come on. Sum number 8. Draw the journal without narration. Start with the journal entries. No narration. Only entries. Fadafat. 8th one. Sir, the starting in a cash account, bank account that is given, it is opening entry or opening balance. Opening balance. लेजर वाले सम में आपको अगर ओपनिंग एंट्री है तो दे विल स्पेसिफाई पास ओपनिंग एंट्री क्लियर कट देगा, otherwise you need not pass in specify clearly, then you do that. सर ये वाला सम इन द बुक्स ऑफ कुलीन होगा ना? Yes, the books of Kulin. ओपनिंग बैलेंस है, उसका ओपनिंग एंट्री नहीं करना है आपको कुछ, नीड टू पास एनी ओपनिंग एंट्री. स्टार्ट विद द जर्नल. फर्स्ट वन फरवरी का महीना है. Kulin got a gift of 50,000 from his father-in-law, of which he bought a car of 20,000 for his personal use, goods of 5,000 and machine of 5,000 and balance cash he invested, of which 50% is deposited in the bank. तो इसको जो है 50,000 का गिफ्ट मिला. Will you pass any entry for this gift? No. Personal item, so we are not bothered. Okay? 50,000 का गिफ्ट का कोई एंट्री नहीं हो. अभी आउट ऑफ दैट 50 उसने 20,000 का पर्सनल कार खरीदा. विल यू हैव एनी एंट्री फॉर दैट पर्सनल कार? नो है. पर्सनल कार का भी कोई एंट्री होने वाला नहीं है. बराबर है. 30,000 जो बचा है उसमें से उसने गुड्स खरीदा है बिजनेस का. These goods are worth 5,000. मशीनरी खरीदा है उसने 5,000 का. एंड बैलेंस कैश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस. बैलेंस मतलब कितना रहेगा इसमें से 20,000. इस 20 में से भी आधा कैश उसने बैंक में डाला है और आधा कैश उसका बिजनेस में रहेगा, मतलब 10,000. So, Harsh Tulsi, can you tell me the journal entry for this? Stock account debit, machinery account debit, bank account debit, cash account debit to capital account, 5,000, 5,000, 10,000, 10,000, the whole is 30,000. Very good, very good. एकदम perfect बोला. Stock account debit, machine account debit, stock account debit, machine account debit, bank account debit, cash account debit to capital account. Okay. Stock कितने का आया? 5. मशीन आया 5. बैंक 10, तो उसने बैंक में इंट्रोड्यूस किया. कैश 10, कैश में आया. तो कैपिटल विल बी 40. No narrations. Cash, stock, machine, amount introduced in bank to capital. Got this entry, all of you?
Sir, in the fifth one, furniture is for office or furniture is for home? Exchange of for furniture. कुछ नहीं दिया तो furniture is for फर्स्ट वाला क्लियर सबको. 3rd February देखो अभी क्या हो रहा है. 3rd February को machinery of 5,000 was lost in transit, of which a claim of 2,000 was recovered from the insurance company. now यहाँ पे claim recovered है कि claim admitted है? Covered. So Dishita, can you tell me the journal entry? Cash account debit, loss in transit account debit to machinery. कैश की जगह क्या लिखना है? बैंक होगा. बैंक होगा क्योंकि क्लेम जनरली आपका बैंक से सेटल हो. So bank account debit, loss in transit account debit to machinery. बैंक में आएगा आपका 2,000. loss 3 machine. Okay. Perfect है. 5th of February, machine of 6,000 was exchanged for furniture of 2,000 and a dog of 3,000 for the security of his home. उसने मशीनरी एक्सचेंज किया तो मशीनरी गया, रिटर्न में उसको फर्नीचर मिला और डॉग आया, लेकिन वो डॉग बिजनेस के लिए है कि घर के लिए? घर के लिए. तो कीर्तना, कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर दिस? Loss on sale of machinery account 1,000. Drawings account debit 3,000. Furniture account debit 2,000 to machinery account 6,000. Very good. Drawings account debit 2,000. Furniture account debit 3,000. To dog is. Why am I not writing livestock over here? It's not for business. Exactly. Dog is not for business. Got it? It is for his personal security. That means it is drawings. You got that? So loss, drawings, furniture to machine. Okay. 10th one. Machine of 8,000 was purchased from Ram and paid installation charges by cash 2,000. Pujan, can you tell me the entry? Machinery account debit to Ram account. To cash account, 10,000, 8,000 and 2,000. हाँ हाँ अभी बराबर. मशीनरी अकाउंट डेबिट में आएगा 10,000, to Ram 8,000, cash 2,000. Machinery to Ram to cash. That is your entry. 12th one. Purchased goods of 6,000 at 10% DD, 2% CD from Ram and paid carriage on his behalf 500. Jainam, is the transaction on cash or credit? Partly cash, partly credit. Only the purchase part you tell me. How are you buying the goods? Partly credit. Purchase. So which discount you will consider? TD. Only TD, because party का नाम consider करो, credit पे खरीदा है आपने. So what will be the journal entry for purchase? Only purchase. Jainam? Purchase account debit to Ram account. Purchase to Ram. भी आगे पढ़ो. And paid carriage on his behalf 500. हमने उसके behalf पे पे किया है carriage. तो क्या एंट्री होना चाहिए? Ram to cash. राम टू कैश. तो यहाँ पे दो एंट्री हो रहा है, एक परचेज टू राम और दूसरा राम टू कैश. दोनों मर्ज मत कर देना, सेपरेट एंट्रीज आएंगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, दैट विल बी 5,400.
and then Ram account debit to cash account, that will be 500. Okay, cannot merge the two entries because एक expense है और दूसरा उसके behalf पे, तो it's like settling a creditor. तो परचेज अलग रखना, राम अलग रखना, डेबिट में कॉमन होता तो मर्ज कर देते. Purchase to Ram 5,400 and Ram to cash. This is for carriage. We are paying 500 on his behalf. Okay. Then we received the amount of carriage from Ram होना चाहिए. 15th वाला जो है उसमें correction करना. We received the amount of carriage from Ram. Paid नहीं है. Received the amount of carriage from Ram. We received the amount of carriage from Ram. ऊपर वाला एंट्री रिवर्स कर देना. ऊपर वाला एंट्री बराबर है वैसे ही रहा, नीचे वाला कैश टू राम. हाँ मतलब यू आर आस्किंग इसका एंट्री बोल. हाँ बराबर है. एंट्री इसका क्या होगा? कैश टू राम. एंट्री विल बी कैश टू राम. दैट इज करेक्ट. एंट्री विल बी कैश टू राम. ठीक है. कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 500. ये वाला मिला सबको. हमने उसके बिहाफ पे कैरेज पे किया था, उसने अपने को वापस दे दिया पैसा, तो कैश आ गया. राम इज द गिवर. अभी हाउ मच आर वी सपोज टू पे टू राम? 5,400. 5,400. कैरेज वाला पार्ट सेटल हो गया. मतलब गॉट दैट. पहले उसके बिहाफ पे पे किया, तभी राम टू कैश, फिर वापस आ गया कैश टू राम. पैसा आया, राम इज द गिवर. देन सेटल्ड राम्स अकाउंट एट 20% CD ओवरऑल. सेटलमेंट एंट्री है. अभी करना है कि बाद में करना है? बाद में करना है. तो ये 20th वाले के लिए जगह छोड़ देना. लीव 2-3 लाइन्स फॉर दिस 20th वाला. फिर 22nd पे जाओ. सोल्ड गुड्स ऑफ 7,000 at 10% TD and 3% CD to Raja. पेड कैरेज ऑन हिज बिहाफ 200. पहले तो मुझे बोलो सेल्स कैसे हो रहा है रुचि? हाउ आर वी सेलिंग द गुड्स? इज इट ऑन कैश और क्रेडिट? Yes. It is on credit. Perfect. पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है, so it's on credit. Perfect. So which discount are we supposed to consider? Only TD. Yes. 10%. That's 700. So you get 6,300. Can you just tell me the entry for sales? Only the entry for sales. Raja account to sales account. Raja to sales would be 6,300, right? फिर आगे बढ़ो, क्या दिया है? पेड कैरेज ऑन हिज बिहाफ. वापस हमने उसका कैरेज पे किया, तो एंट्री क्या हो? Cash account. We are paying his carriage. Raja to cash. Raja to cash. राजा टू कैश. अगर हम अपना कैरेज पे करते तो कैरेज टू कैश. उसका पे कर रहे हैं तो राजा टू कैश. ऊपर किया ना अभी राम टू कैश. सेम थिंग. उसके बिहाफ पे कर रहे हो ना आप. Sir, if he paid carriage for us, then He paid carriage for us, then it would have been what? Carriage to Raja. Carriage to Raja. अपना expense है and Raja is the gift. Then it would have been carriage to Raja. समझ आया? हमने उसका पे किया है. Merge both the entries. Yes, in this case you can merge and you have to merge because Raja is a common debit. So Raja account debit to sales and Raja to cash. तो combined entry बनेगा आपका Raja to sales to cash. Raja to sales to cash, and that will be 5,000, 6,500, 6,300 and 2. ये मैंने पेपर में भी पूछा. It was there for the test. Raja to sales to cash. ये आप मर्ज कर सकते हो. ऊपर वाला क्यों मर्ज नहीं किया समझा आपको? ये राम वाला भी सिमिलर था, लेकिन उसमें परचेज टू राम था, क्रेडिट में राम क्रेडिट हो रहा था और बाद में राम टू कैश था, राम डेबिट हो रहा था. डोंट मर्ज दैट. कैन मर्ज दिस राजा टू सेल्स टू कैश. कॉमन डेबिट यू कैन मर्ज, कॉमन क्रेडिट यू कैन. देन राजा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% रिकवर्ड. अभी करना है कि बाद में करना है? बाद में. सेटलमेंट एंट्री है. 2 सेटलमेंट एंट्रीज है, छोड़ा है हमने जगह उसके लिए.
Six ledger accounts. Six ledger accounts. So in the books of Kulin. Draw the six ledger accounts: cash, bank, Ram, Raja, machine, and capital. Six accounts: cash, bank, Ram, Raja, machinery, and capital.
Let's begin. First entry, first item is opening balance. तो लिख के जाओ सबका opening balance. Cash will have debit balance. Date will be 1st February. Balance reading. खुद से करते जाओ posting. Come on. Balance लिख के posting try करो. Don't copy. Just refer to the screen. If you have any doubt, try it on your own. What balance will bank have? Debit. Ram and Raja, they have given it specifically. Ram is our creditor. Yes. So बोलो बोलो. कैश का डेबिट बैलेंस आएगा ना? Yes. क्यों कैश का डेबिट आएगा बोलो? हमारा एसेट है. Asset. All assets will have debit. What about machine? Eighth. हाँ. What about machine? डेबिट बैलेंस एसेट. What about capital? क्रेडिट बैलेंस इंटरनल लायबिलिटी. Very good. Today you'll get the test papers. Many of you have done fairly well. Some silly errors here or there. 46 up in this paper was good. 46, 47, 48, 49, 50. So can you give it tomorrow? I'm not today. You have your birthday or what? No, but tomorrow we have exam anyways. So after that only. अच्छा आज दोगे तो आज दूंगा तो टेंशन. You have done well, don't worry. You scored well. Some of you have done many silly errors. Okay. 2-3 marks. But 47, 46 के नीचे है तो फिर मेहनत कम किया है. Need to work hard. Objective test था. Can't lose marks there. करते जाओ. पोस्टिंग करते जाओ. इससे करना.
Once you have done the posting, try the settlement entry on your own. Last two settlement entries. So, sir, for settling Ram's account, it should be 2% cash discount. 20. Okay, sir. नहीं दिया है ना क्वेश्चन 20% सीडी ओवर 20.
सर राजा राम के अकाउंट में टोटल 17,900 है। क्रेडिट का टोटल है माइनस डेबिट करके हाँ पे करना। सर 20th ट्रांजैक्शन में भी राम का अकाउंट हम सेटल कर रहे हैं तो उसमें क्रेडिट माइनस डेबिट होगा ना। हाँ फिर सीडी अलग से माइनस करना है। सीडी बाद में अलग से पहले क्रेडिट माइनस डेबिट करके ढूंढने रख कितना पैसा दे उसके बाद anyone has done cash account is the balance 24,630. Sir, I got 23,630. 23,630. The solution. How much we paid got received from Ram in the 15th transaction? The carriage amount we received 500 na carried amount cash to Ram 500. सर कैश अकाउंट बताओ ना। सर राम में 13 में सर कैसे आया बताओ। 13 राम का देखो क्रेडिट माइनस डेबिट किया राम का क्रेडिट माइनस डेबिट कितना आया तुमको यहाँ पे देखो नोट बना है क्रेडिट माइनस डेबिट किया तो यू गेट 17,400 ना इतना पैसा देना था राम को यस सर और उसमें से 20% सीडी माइनस किया 348 या पेइंग 13,900. Sir, what is the balance of cash? 23,630. तो सर राम वो जो अभी हम लोग 20th ट्रांजैक्शन है तो उसमें ऐसा आएगा ना राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। यस ये पहले जर्नल में लिखना ये राइट हाँ वही जर्नल में ही बोल। सर कैश अकाउंट सबसे लास्ट में करें ना तो फिर सब तो हाँ ऑब्वियस बैलेंस सबका लास्ट में ही करना है पहले सेटलमेंट का एंट्री करना है पोस्टिंग करना है सब पोस्टिंग होने के बाद लास्ट में बैलेंस बीच में कोई बैलेंस मत कर देना हाँ सर वो सब पोस्टिंग के एंड में बैलेंस करना So, what is the balance of machinery account? 9,000.
it clear? राम राजा का सेटलमेंट समझा? राम राजा सेटलमेंट एंट्री. लेजर में हम लोग राम के कैश में बाय राम अकाउंट करेंगे ना, ये 28 ट्रांजेक्शन का, तो उसमें अमाउंट 13,920 होगा. 13,920 यस. स्प्लिट करके 13,920 और राम में 2 कैश 13,920. राम में 2 डिस्काउंट रिसीव्ड भी है 348. This is a type. Can you show Ram's account? Ram's account. राजा का उल्टा करना है, डेबिट माइनस क्रेडिट. 9500 में से 4750 मिला, 4750 बैक. पहले जर्नल करना है, फिर पोस्ट करना है, फिर बैलेंस. Which sum, sir? This is No, after this. After this 21st. 21st. Sir, 1 minute. Can you show capital account? Capital. Thank you, sir. बोलो. Account. राजा अकाउंट तो सिंपल है ना, सीधा बाय कैश और बाय बैक. Of Raja and Ram. हाँ, राम का क्या दिया? His account was settled at 20% CD overall ना. तो how will you find out कि राम को कितना पैसा देना है? तो क्रेडिट माइनस डेबिट ना. तो क्रेडिट में क्या था? 485400 एंड 500. और डेबिट में क्या था? तो खाली 500. I've done it over here. Working note. Credit minus debit 17,400. This much we are supposed to pay. Correct? And we paid how much at 20% CD. तो इसका 20% कितना होता है? 17,400 का 20% is 348. We actually paid only 13,920. हमारा journal entry क्या होगा? तो I've written over here. This is the journal. Ram to cash to discount. Then post it. So Ram to cash, Ram to discount. Ram to cash will be 13,920 and Ram to discount will be 3,480. Similarly राजा का कैसे करने का? कितना पैसा लेना है? डेटर है ना, डेबिट साइड बड़ा है. डेबिट माइनस क्रेडिट, तो डेबिट में ही था, क्रेडिट में कुछ था ही नहीं, खाली था. डेबिट माइनस क्रेडिट किया तो आई गॉट 9500. मतलब उससे 9500 लेना था, आधा दिया 4750, आधा बैड डेट is over here. Cash, bad debts to Raja. And then cash to Raja. So in Ram's account, we had to pay him 17,290, but we paid him 13,920. कैश में टोटल कितना आया? 40,250 ना. या बराबर.
Ram को we are supposed to pay 17,400 credit minus debit. Can you show cash account? Cash. So what is the balance of machinery? 9,000. Machinery balance is 9,000. सर अभी कौन सा सम 21st. ये वाला PDF ग्रुप पे भेजो ना तो चेक इंडिविजुअली तुमको अलग अलग अकाउंट देखना है. The 21st summer. So Yes. 21st sum. Yes, 21st. चेक मैंने सेंड किया है सॉल्यूशन. बोलो एनी अदर डाउट. सेटलमेंट समझा. राम राजा, कैपिटल मशीन, बैलेंसेस, कैश. राम राजा में राजा का जो अकाउंट दिया है वो हम लोग ने वो डेबिट माइनस क्रेडिट लेके किया है ना. डेबिट माइनस क्रेडिट 9500 माइनस 9500 लेना था ना उससे. आधा मिला, आधा नहीं मिला. आधा कैश, आधा बैड डेब्ट. सर 5-10 मिनट रुकना सिर्फ अभी बैलेंस ही करने का. हाँ अभी करो और 21st स्टार्ट करो. वो भी खुद से ही करना है स्टार्ट टू एंड. Those who have finished start with 21st. 21st sum. तो 21st में फर्स्ट एंट्री में स्टार्टेड बिजनेस है कि इंट्रोड्यूस्ड इन रनिंग बिजनेस. इंट्रोड्यूस्ड इन रनिंग. 21st में भी फर्स्ट लाइन पे इंट्रोड्यूस्ड इन रनिंग बिजनेस. 21st sum, just make that correction on the first line. It will be introduced in running business. Sir, after journal we stop and let you discuss or go ahead with ledger. कुछ डाउट है तो रुको. ये सब में कुछ ऐसा नहीं है. करते तो जाओ. मैं कर रहा हूँ बीच में. जर्नल आई डिस्कस हो जाएगा. जर्नल तो लेजर स्टार्ट कर. ना डिफिकल्ट नहीं है. एंड ट्राई 21st सम ट्राई करो. ये सब में और कोई डाउट? एनीवन? राम राजा, सेटलमेंट, कैपिटल मशीन, बैलेंस. बोलो. All clear? This one. 21st sum. 21st sum में कितना अकाउंट्स बनाना है पहले वो चेक कर. How many accounts are you supposed to make? 3 accounts. 3 accounts. Cash, bank OD, and what do you mean by bank OD? Overdraft. Liability of ours. That is a credit balance. It is simply a credit balance of bank account. ये तो बैंक का सभी पोस्टिंग उसी अकाउंट में होगा. समझाया? बैंक ओडी एंड बैंक इज वन एंड द सेम अकाउंट. खाली फर्क credit balance. Why credit balance? Because it's your what? Liability. All liabilities will have credit balance. Is that clear? So to balance BD के जगह हो जाएगा by balance BD. Rest everything same. On start.
तो ओनली लास्ट एंट्री आपको छोड़ना है, वो सेटलमेंट वाला है, बीच का बाकी सब जर्नल चालू करो। सर अभी 21st करना है ना? या 21st। फर्स्ट लाइन खाली इंट्रोड्यूस्ड इन रनिंग बिजनेस कर देना, इंट्रोड्यूस्ड इन रनिंग बिजनेस। हमने उधर से बैंक का ₹5,000 ही दिया था। नहीं नहीं, अरे अकाउंट जर्नल एंट्री में सब जगह बैंक लिखना है, जो लेजर बनाओगे ना उसके हेड में खाली बैंक कोड ही लिखना, बिकॉज इट इज हैविंग क्रेडिट बैंक। वो बैंक कोड एंड बैंक अकाउंट इज वन एंड द सेम। बैंक कोड जस्ट इंडिकेट दैट यू हैव ओवरड्रॉन नेगेटिव बैलेंस। एंट्रीज में कहीं बैंक कोड ही नहीं। एंट्री में रिसीव्ड 1/3 अमाउंट फ्रॉम राम आएगा ना? 1/3 नहीं है, 3/4। अच्छा कौन सा बोल रहे हो? 25th। 25th, हाँ सोल्ड गुड्स है ना, हाँ तो रिसीव्ड आएगा। हाँ तो उधर वही है ना, पेड बाय राम, पेड बाय राम मतलब वी हैव रिसीव्ड, इट इज वन एंड द सेम। करेक्ट।
Sir, can you explain the 25th entry again? 25th. Fifth. Sold goods to Ram and हमने बेचा है तो will we receive or will we pay? Will receive. Receive. वो received 1/3 ही है. उधर खाली देने का तरीका थोड़ा weird है. Paid 1/3 by Ram. तो राम ने पे किया है. हमने receive. We have received. Got it? Normal only. This is your journal. Please go through it once before you make the lecture. If you have any doubt, you tell me quickly. You are still doing do. Sir, the 27 return goods worth. बाजू में पढ़ो. Gross. Okay, तो फिर TD TD minus होगा ना. हाँ. We never record gross prices anywhere.
इन टीडी तो नहीं लिखा अभी, तो ऊपर जो टीडी था वही सब ट्रैक करेंगे। हाँ, सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न के वक्त सेल्स का टीडी, परचेज रिटर्न के वक्त परचेज का टीडी। ओके सर। जम रहा है प्रथम डेढ़िया, हर्षिता को जम रहा है, हर्षिता निर्णाली, निर्णाली का सिली मिस्टेक हो गया ऑब्जेक्टिव में। माया हैज स्कोर्ड फुल लाइन। वीर आल्सो हैज स्कोर्ड। बोलो जर्नल क्लियर, इसका जम रहा है जर्नल, खुद से ट्राई करो, वेरिफिकेशन के लिए देख लो, ट्राई इट ऑन योर ओन, आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। Those who have finished journal can move to ledger. 3 accounts. Isha को जम रहा है, Isha. Previous sum, this sum, all entries. Anshi. जम रहा है posting. Balancing, settlement entries. Settlement entries are very simple. Just check whether is your creditor or debit. क्रेडिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट, डेबिट साइड बढ़ा है तो डेबिट। अमाउंट कैसे ढूंढना है, क्रेडिटर है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, डेटर है तो डेबिट माइनस। प्रिया गांधी, here with the journal part, this one. पूछना, कुछ नहीं समझ में आया प्लीज आस्क, डोंट कीप इट पेंडिंग, आस्क एंड डू। डू इट ऐसे ही भगा भगा के खाली छाप दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे का चैप्टर में और बड़ा प्रॉब्लम। पास के three accounts, those who have finished journal, go to the 3 accounts, make them. See, bank and bank OD account is one and the same. Don't get confused, okay? Bank and bank OD is one and the same. Bank का सभी posting bank OD account में ही होगा। खाली बैंक OD और बैंक में क्या फर्क है? बैलेंस का, ओपनिंग बैलेंस। बैंक दिया है तो टू बैलेंस BD, बैंक OD दिया है तो बाय बैलेंस। बैंक एंड बैंक OD account are one and the same. इनफैक्ट हेडिंग में आप बैंक OD के जगह बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, चलेगा। बैंक ओडी के जगह बैंक अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। 27th वाले ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न अकाउंट टू राम अकाउंट आएगा ना सर? हाँ, सेल्स रिटर्न टू राम। अमाउंट कितना आएगा? 900। हाँ, परफेक्ट। हाँ, टीडी माइनस करना। टीडी माइनस करना है, यस, ये ग्रॉस अमाउंट। Sir, in the 20th transaction of purchase, half paid by half cash, तो उसमें 4,500 पे डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन दोनों पे भी दोनों पे करना ही है ना सीडी कैलकुलेट। कैश पे और चेक पे दोनों पे सीडी आता ही है ना, तो आप पहले ही सीडी माइनस कर दो, ये तो ऐड करो। ऐसे करोगे तो भी चलेगा, सीडी सीडी आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, पहले ही सीडी माइनस करके बाद में डिवाइड करो कैश और चेक। चेक द जर्नल एंट्रीज, जर्नल परफेक्ट होना चाहिए।
जर्नल परफेक्ट होगा तो लेजर आएगा, जर्नल में गड़बड़ है तो लेजर विल ऑटोमेटिकली गो रॉन्ग। सोमवार मंडे शाम को 7 बजे वी आर मीटिंग अगेन फॉर पेपर 7 to 8:30, ओके। और क्या So होमवर्क? which day? मंडे इवनिंग 7 to 8:30। एंड होमवर्क बोला था आपको, याद है होमवर्क? अकाउंटिंग इक्वेशन, 5 अकाउंटिंग इक्वेशन एनएम वाले, और टेबल रिवाइज करना है, एनालिसिस टेबल रिवाइज करके आना, खाली फॉर्मेट देख के आना। एनालिसिस टेबल सॉल्व मत कर देना, हम लोग क्लास में करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन खाली होमवर्क है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नहीं लिखना है, खाली इक्वेशन बना के लेके आना, ठीक है। सोमवार 2 और नए पेपर्स भेजूंगा, तो 7 to 8:30। सोमवार 7 to 8:30 2 और नए पेपर्स आ जाएंगे ग्रुप में। आपका 1 यूनिट टेस्ट नहीं, 6-7 यूनिट टेस्ट हो जाए। लेजर ड्रॉ कर लो फटाफट। सर जब राम इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसका एंट्री ऐसा आएगा ना, कैश बैड डेब्ट्स टू राम। बराबर है, कैश पैकेज। सेल्स वोंट कम इन द पिक्चर। नहीं, अभी क्यों सेल्स? राम से पैसा लेना था ना, राम से कितना लेना था, डेबिट माइनस क्रेडिट करके मिल जाएगा, तो दिया वो 6,000 लेना था ना, तो जो मिला वो 50%। कैश 3 बैड डेट्स 3 टू राम। थैंक यू सर। सेल्स तो पहले ही हो गया ना, इनकम हो गया, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है। So, sir, in the last entry, we have to take only 6,000 rupees into account. सॉरी 6 नहीं आएगा, योर आई थिंक 6 का सेल है ना। Sorry. 6 + 5 11 आएगा, 11 वोट भी। Yeah, correct. ओपनिंग बैलेंस भी है ना 11। सर ये बैंक ओडी है, तो इसमें जो अभी ये बैलेंस अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में जाएगा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं, बाय बैलेंस बीडी। हाँ वही, सॉरी। टू बैलेंस बीडी की जगह बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट। विदुषी, राम का इट इज नॉट 6, इट इज 11।
डेबिट माइनस क्रेडिट. लेजर बना के चेक करो, डेबिट माइनस क्रेडिट, एवरीथिंग यू हैव. I think you have explained. 5050. 5500. 5050. 50. Sir, 900 goods are returned. क्रेडिट में भी है ना. हाँ, right. So it will be 11,000 minus 900. 11,000 minus 900, 10,100. 10,100 का हाफ. 5050 कैश, 5050 बैंक. देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चेक कर लो. His account will be 5,000, right? 5,000. What? Cash. In the cash. In cash account By by drawings, it will be 5,000. 5,000. By drawing 6,000. Goods. Sir, it's to Vijay account 8,000. 8,000. 2,000 का 40%. 800. 800. बराबर. 1,200 रुपया बैड डेट है, 800 रुपया कैश है. ऊपर जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री से करना. कैश टू विजय, बैड डेट्स टू विजय. Sorry. I had asked you, can I meet Yeah. myself? Thank you, sir. Complete this. बाकी लोग check the answers फटाफट.
Just confirming, in the 10th transaction, it is drawings debit to cash debit to bank debit. So in cash side, bank will it will be to bank, and in bank it will be buy drawings and buy cash. बराबर. Bank putting your credit side is greater. 6,275 आ रहा है. हाँ सर. Real has also scored full on that test. Real correct. Cash. $41,290 आ रहा है क्या? Total of cash. Yes. So 41,290 minus 9,275. That will be 41,000. Is the balance of cash anyone has calculated? Sir, 32015. These are the three accounts. Check. These are the types you are going. The solving will come to know. Journal plus ledger combined problems where you are asked only to make 3 to 4 accounts, 2 to 3 accounts. So whenever they have asked ledger, we have to make journal, right? Ask you only ledger. So even if you don't make journal, if you do it orally in your mind and directly post it, still you get marks. But advisable है कि हमेशा journal बनाओ क्योंकि orally करने जाओगे ना कुछ posting error होने का chance है इसके लिए. So better make a journal. So that's why I tell you without narration and all. So you can skip the narration, short forms and all you can use. But journal बना के करो. So that is always foolproof. Won't do mistake any. तो सर अगर कॉलेज में अगर ये लोग एग्जाम देते और उसमें से जर्नल लेजर बनाने के लिए तो उसमें भी नरेशन स्किप कर सकते हैं. Yeah. क्वेश्चन पढ़ने का. If they have asked you prepare journal and ledger, तो फिर दोनों fair में चाहिए. But if they have asked you only ledger, If they have then given, journal rough में. Yeah. so if they've given journal, like the sum is only of journal and last one is settlement entry, and we don't have ledger, so then how to do? Then we have done it now. Debit minus credit ऊपर से ढूंढ के सब journal entries से वो करना पड़ेगा. Debtor है तो debit minus credit, creditor है तो credit minus debit. या फिर we can make a quick You like can make a quick small account. rough. Yeah. One account quick rough में बना के you can check and do it. That is also possible. Yes. Can do that. हो गया ये वाला? Sir, 2 minutes. Last balancing.
लास्ट बैलेंसिंग करो, खुद से करना, मैनुअल कैलकुलेशन का हैबिट डालो, छापना मत, इधर छापोगे पेपर में कभी नहीं आने वाला है। मैन्युअली कैलकुलेट, वेरीफाई बाय सर योरसेल्फ। कैश अकाउंट का क्या है बैलेंस? देखो 32015। ये हमारा चेक आज मिल जाएगा। बेटर है, बट ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट वीक अभी लेजर का टेस्ट होगा तुम्हारा। चाहिए इज अवर कुंभकर्ण ईद कमानी। सर 2-3 लेजर में एक्चुअली यू डोंट हैव जीएसटी, ओनली पोदार कीप्स इट। ओके, तो लेजर में एक्चुअल तुमको है नहीं जीएसटी का। खाली जीएसटी अकाउंट को बैलेंस नहीं करना होता है क्योंकि तुमको सेट ऑफ एंट्रीज नहीं। जीएसटी अकाउंट में खाली पोस्ट करने का, छोड़ देने का, बैलेंस नहीं। और उसको टोटलिंग में नहीं गिनने का मतलब? सॉरी, तो उसको टोटलिंग करते वक्त नहीं गिनने का? नहीं नहीं, टोटलिंग बैलेंसिंग कुछ नहीं करने का, छोड़ देने का, खाली पोस्ट करने का, छोड़ देने का। सर नेक्स्ट वीक जो आप टेस्ट लेने वाले हो उसमें आप पहले से ही जर्नल दोगे कि हम लोग को बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं भाई, मेरा तो जर्नल प्लस लेजर कंबाइंड रहेगा टेस्ट। और कितने लेजर है? यही 2 से 3, 2-3 अकाउंट्स इन टोटल क्वेश्चन। questions would be two question, 1 hour test, दोनों 30 लेजर marks. होगा? How many marks? 30 marks, 15 marks, 2 question, journal plus ledger combined. दोनों क्वेश्चन में जर्नल बनाने का है? दोनों क्वेश्चन में जर्नल प्लस लेजर। No narrations. In that case, no narrations. Marks will be mainly for ledger. Journal लेकिन होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स चलेगा, नरेशंस नहीं लिखोगे चलेगा। इन जर्नल लेजर परफेक्ट शेप, लेजर परफेक्ट। अभी होमवर्क ले लो फटाफट, सम नंबर 7। सम नंबर 7 दैट्स फॉर होमवर्क। उसमें करेक्शन करना सम नंबर 7 में। अच्छा मुझे पहले बताओ, सम नंबर 7 में विच अकाउंट्स आर यू सपोज टू मेक? Cash Cash, Gyan and Deep. Do you have any opening balance in either of those accounts? No. No opening balance. Okay, तो directly posting and closing balance. उसमें last transaction दिख रहा है आपको? Exchanged goods of list price of 15,000 दिख रहा है? Just cut that and make exchanged computer of 15,000 for office furniture of the same amount. Exchanged computer of 15,000 for office furniture of the same amount. Last transaction. Sir, मतलब कंप्यूटर आया ना? Exchange computer, या कंप्यूटर गया, आया नहीं गया। Exchange computer for office furniture of the same amount. Exchange computer वाला कंप्यूटर गया और ऑफिस फर्नीचर आया, फर्नीचर टू कंप्यूटर। ओके, So next week test है? Sir, which page is the question on? पेज इज 35 and 34. 34 में स्टार्ट हो रहा है, 35 में एंड हो रहा है। 7th So next week test है? नेक्स्ट वीक बेटा, नेक्स्ट वीक के एंड में आ जाएगा, वीकेंड पे। सर कंप्यूटर गया और ऑफिस फर्नीचर आया। कंप्यूटर गया और ऑफिस फर्नीचर आया, फर्नीचर टू कंप्यूटर, दैट्स योर ट्रांजैक्शन। 3 अकाउंट्स, कैश, ज्ञानदीप, सेटलमेंट के साथ, बैलेंस के साथ। ठीक है, तो डाउट्स है तो लेट मी नो, अदरवाइज वी आर मीटिंग ऑन मंडे इवनिंग 7 o'clock फॉर द पेपर्स। ओके।
Sure. Doubts है तो रुको, otherwise you can leave. Tata bye bye. Bye, sir. Thank you. Sir, Okay, thank sir. you. Thank